Today we are going to unbox the dissection box and now आज इस वीडियो में हम लोग बात कौन सी है, उनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द स्कल्प। बेसिकली दिस वन इज यूज फॉर कट आउट द आउटर स्किन एंड द थिक पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड सेकंड वन there is about the different forceps. This one is about the two thin forceps और इसको हम यूज करेंगे for holding the dense tissues. Second one is the pointed forceps, and this one is also used the holding for the tissues, but this one is the sensitive tissue. Third one is also forceps, but this one is known as a blunt forceps. So basically three forceps है, blunt, pointed और टूथिंग। तो ये तीन तरह के हमारे पास ये फॉर्सेप्स हैं जो बेसिकली हम यूज करते हैं डेंस और सेंसिटिव टिश्यूज को होल्ड करने के लिए। फर्दर दिस वन इज अ ड्रॉपर जो हम यूज करेंगे लिक्विड को यूज करने के लिए। फर्दर देयर आर थ्री डिफरेंट सीजर्स, 1 2 and 3. Three different scissors are used in the surgical purpose in the dissection. Further, there are the two different needles. One is the arrowhead needle and one is the pointing needle, and they are also used in the dissection of different organisms like pigeon, frog, and they are also used in the surgical purpose. तो ये आपके डायसेक्शन बॉक्स से डिफरेंट ऑपरेशनल टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे आपकी डायसेक्शन के लिए या डिफरेंट सर्जिकल पर्पस के लिए उनको ये इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।